Hello students, so today we are going to start with a new chapter in accountancy, that is accounting for partnership firms fundamentals. Students, in board exams, this accounting for partnership firms, it comes for 30 marks, means it has weightage of 30 marks in total, and it has 7 chapters. Earlier it used to have the weightage of 35 marks, but now its weightage is 30 marks because the weightage for accounting for companies, it has been increased from 15 to 20 marks. So we shall be starting with the very first chapter, that is accounting for partnership firms fundamentals. That is it has the basics of accounting for partnership firms. So let's start with it. So it starts with the definition of partnership. So as we have already studied in business studies in class +1, forms of business organizations, in which we had studied partnership as well. So partnership is defined by Indian Partnership Act 1932. It is defined as partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means that partnership is basically the relation between persons, minimum 2 persons, and this relationship exists because these persons have agreed to share, they have agreed to carry on some business and to share the profits of such business, and the business is carried on by all the partners, or it may be any of them acting for all. It means that the partners are agents as well as principals, because as an agent they bind the other partners by their acts, right? So this is basically the test of partnership. So it is not necessary that all the partners must be actively involved in the business. They must be actively carrying on all the business activities. The business may be carried on by all the partners or any of them acting for all, right? And the other partners will be bound by the acts of such partners who is acting on behalf of others. And the persons who have entered into partnership with one another, individually they are called partners and collectively they are called firm. And the name under which the business is carried is called firm name. Now we discuss about the nature of partnership. See, from legal point of view, partnership is not a separate legal entity from its members. Means just like in the as we can say that over here also, just like in sole proprietorship also, the liability of the sole proprietor was unlimited. Similarly, in this case also, we can say that the liability in case of partnership is also unlimited, or the partners have an unlimited liability. So from legal point of view, partnership is not a separate legal entity from its members, but from accounting point of view, partnership is a separate entity from its members, because we prepare a separate account. If a partner gives a loan to the firm, then the firm is liable to pay interest to the partner for the loan advanced by him to the firm. Okay? Similarly, if a partner withdraws some amount from the business, like drawings, interest is also charged from the partner. The firm charges interest on drawings from the partner. So from accounting point of view, partnership is a separate entity from its members. Just like in sole proprietorship we had done business entity concept. It means sole proprietor and business, they are two separate entities. In the same way, from accounting point of view, we are saying the same thing, that partnership is a separate entity from its members. Now we discuss essential features or characteristics of partnership. The very first feature, it is the partnership has 2 or more persons. It means there must be minimum
two members who are called partners. There must be at least two persons to form a partnership, and all such persons must be competent to contract. That is very important point. All such persons who have entered into partnership, they must be competent to contract. Means they should have it means according to Indian Contract Act, they should have the capacity to enter into a contract. It means that if we exclude minor, persons of unsound mind, and persons disqualified by law, these three persons, they are not competent to contract. Apart from this, all other persons are competent to contract. So all such persons who have entered into partnership, they must not be minor, they must not be persons of unsound mind, and they must not be persons disqualified by law for entering into any contract. And rest, all the persons are competent to contract. And that was the minimum number of persons, that is 2. And what is the maximum number of persons who can be as a partner? So the central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. It means a partnership cannot have more than 50 partners. So if a question comes that somehow 52 persons, they agreed to join, they agreed to start a business, and they by entering into a partnership. So can it be called a valid partnership? No, it is not a valid partnership. It is not a partnership because a partnership cannot have more than 50 members, right? And the second essential feature or characteristics of partnership is agreement. Partnership comes into existence by an agreement. This agreement, it can be written, it can be oral also, right? So if the agreement is a written agreement, it is known as partnership deed. Okay, so it doesn't mean that oral agreement is not an agreement. Partnership can come into existence by either ways, that is written agreement as well as oral agreement, both are valid. Third, lawful business. A partnership must be formed to carry on some lawful business. So a partnership created to carry some illegal business is not a partnership. It is not valid. Then the next point is profit sharing. The agreement between the partners must be to share profits and losses of the business. And the last point, the fifth feature is business can be carried on by all or any of the partners acting for all. So business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners, that I have already explained. So partners are agents as well as the principals. As an agent, a partner represents other partners and binds other partners by his acts. मतलब मीनिंग ये है कि अगर हम एक पार्टनर को, if we consider a partner as an agent, it means he is representing other partners and he is binding other partners by his act, because जो भी वो काम कर रहा है उससे दूसरे पार्टनर्स भी उसके उस एक्ट से बाइंड हो जाते हैं. और एज अ प्रिंसिपल he is bound by the acts of other partners also. Actually this is the test of partnership. ठीक है कि a principal, a partner acts as an agent as well as the principal. So as an agent he represents other partners and binds other partners by his acts, and as a principal he is bound by the acts of other partners, because a principal is bound by the act of an agent. Similarly, as a principal he is bound by the acts of other partners also. So these are the features of partnership. Now let's discuss rights of partners. What are the rights given to partners in a partnership? Every partner has a right to participate in the management of the business. He has a right to be consulted about the affairs of the business. He has a right कि उससे भी consult किया जाए about the conduct of business, जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में. He has a right to inspect the books of accounts, जो भी partnership की books of accounts maintain कर रखी हैं.
he has right to inspect those books. He has a right to share the profits and losses in an agreed ratio. If no ratio is agreed upon, then it is considered to be equal. And he has a right to receive interest at an agreed rate of interest in case a partner has advanced any loan to the firm. अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो he has a right कि उसको उसके ऊपर जो भी उसने एडवांस किया है अमाउंट, उसके ऊपर एट एन एग्रीड रेट उसको इंटरेस्ट दिया जाए. और अगर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को एग्री नहीं किया है पार्टनर्स ने आपस में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इफ द पार्टनर्स हैव नॉट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर तो पार्टनर्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को एग्री किया हुआ है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए जो भी उसने फर्म को लोन दिया हुआ है. और अगर उनके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो रेट प्रोवाइड किया गया है, मेंशन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसको फॉलो किया जाता है. तो वो है 6% पर एनम. नेक्स्ट राइट इज टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, बिकॉज अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो उसके लिए सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है. इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ओनली देन अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप. He has a right to retire from the firm after giving proper notice. हर पार्टनर को ये राइट है कि वो फर्म में से रिटायर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पहले एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को फर्म में. He has a right to get indemnified for any payments made by him on behalf of the firm. अगर उसने फर्म के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट्स दी हैं, फर्म के बिहाफ पर दिए हैं, तो he has a right कि उसको इंडेमनीफाई किया जाए जो भी उसने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट्स दी हैं. ओके, उसे वो पैसा वापस मिलना चाहिए, इसका मीनिंग ये है. सो दीज वर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स. नाउ वी मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप जो होती है एक्सिस्टेंस में आ जाती है, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो फ्यूचर में तो उस रिटन एग्रीमेंट को रेफर किया जा सकता है उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करता है पार्टनरशिप की, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. सो द रिटन एग्रीमेंट डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप is known as partnership deed. So partnership can come, ये तो मैंने आपको साथ डिस्कस किया अभी कि partnership can come into existence either by any oral or written agreement. लेकिन however it is better to have a written agreement to avoid any disputes in future. And this partnership deed, it is a legal document which is signed by all the partners. अब इस partnership deed में mention क्या होता है, लिखा क्या होता है? इसमें बहुत सारे clauses होते हैं. सबसे पहले इसमें पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेस, उनकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है. देन फर्म नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म इज देयर. देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे किया जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, पार्टनरशिप की कमेंसमेंट कब होगी, व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. Then number of clauses are there about the interest on capital to be given to partners, interest on drawings to be charged from partners, interest on loan advanced by a partner to the firm, remuneration of partners. Remuneration का मतलब होता है, मीनिंग होता है सैलरी एंड कमीशन, कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जानी है, कितनी उनकी कमीशन बनती है. ये सारे के सारे क्लॉजेस जो होते हैं, number of clauses are there that are contained in partnership deed. तभी that's why it is said कि अगर इनके बीच में किसी बात को लेकर कोई भी dispute हो जाता है तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसी को रेफर किया जाता है कि what does the deed say about these things, so that उनके बीच में
उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। अब ये पार्टनरशिप डीड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? द रीज़न इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लीगली मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन इट इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब है कि अच्छा है कि अगर ये हो, इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड, इट इज़ प्रेफर्ड कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनर्स के बीच में अगर किसी भी बात पर डिस्प्यूट होता है तो उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ओरल एग्रीमेंट्स की कोई भी इतनी ओरल एग्रीमेंट्स को हम कहाँ तक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज टू हैव अ पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, नाउ आई एम discussing very important point, in the absence of partnership deed, provisions of Indian, it is not India partnership deed, it is Indian, provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply। तो अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तब वहां पर कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वहां पर अप्लाई होते हैं, वहां पर वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब वो प्रोविजंस क्या हैं? प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन वी फॉलो whatever is contained, whatever the provisions are given in the Indian Partnership Act 1932। So कौन कौन से मैटर्स में क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? तो वेरी फर्स्ट वन इज मैटर्स and the second column is provisions of Indian Partnership Act 1932। The first matter is sharing of profits and losses। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे और वो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर किए जाएंगे? शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। इट मीन्स कि अगर तो पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो उसमें तो एक एग्रीड रेशियो होगी कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इट मीन्स उन्होंने आपस में किसी एग्रीड रेशियो नहीं है, तो उस केस में द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। ओके, अब सेकंड मैटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इफ द पार्टनरशिप डीड हैड बीन देयर तो वहां पर लिखा जाता कि इंटरेस्ट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इतने % पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इट, दो बातें हैं, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर बनाई गई है तो वो साइलेंट है। तो अगर इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन्ड और इफ इट इज मेंटेन्ड एंड इट इज साइलेंट, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नाउ द थर्ड मैटर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और इट इज not prepared in the absence of partnership deed, interest on drawings shall not be charged from partners। Fourth जो मैटर है that is interest on loan advanced by a partner to a firm। If partnership deed is not there or it is silent, then we apply the provisions of Indian Partnership Act और उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट जो होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पार्टनर को दिया जाता है अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, he will be entitled to receive interest at 6% per annum for the amount he has given to the firm, right? Then ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है that has to be compulsorily given to the partner, वो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा, 6% पर एनम पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड बनाई गई है या नहीं बनाई गई। अगर बनाई गई है
तो उसमें जो रेट लिखा है उस पे दिया जाएगा, और अगर नहीं बनाई गई है तो उसको 6% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट मैटर इज अबाउट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. रेम्यूनरेशन का मीनिंग होता है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स. सो in the absence of partnership deed, remuneration is not paid to any partner. Then the last point is about the admission of partner. New partner cannot be admitted unless all the partners agree to it. जब तक सभी partners agree नहीं किए करते एक point पर किसी partner को admit करने पर, तब तक नए partner को admit नहीं किया जा सकता. It means a new partner can only be admitted with the consent of all the partners. Otherwise, he cannot be admitted. So, there are 6 matters or 6 cases in which the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply if the partnership deed is not there or where it is silent. The first one is sharing of profits and losses. In the absence of partnership deed or where it is silent, the profits shall be shared equally by the partners. Interest on capital shall not be allowed to partners. No interest on drawings to be charged from partners. If a partner has advanced any loan to the firm, interest on loan is paid at 6% per annum to a partner, whether the firm earns profits or incurs losses. Means thus this amount of interest at 6% per annum, it has to be mandatorily paid to the partner even if the firm incurs a loss. चाहे firm को profit हो रहा है चाहे loss हो रहा है, लेकिन ये 6% per annum पे, minimum 6% per annum पे उसको interest partner को देना ही पड़ेगा. So it is a charge against profit that will be discussing in subsequent class. And if the partnership deed is silent or it is not prepared, no remuneration is paid to any partner and no new partner can be admitted without the consent of all the partners. And there are few other provisions also about Indian Partnership Act 1932. These are, if all the partners agree, a minor may be admitted for the benefits of partnership. Earlier I told you that a person who is competent to contract can be a partner to a firm. A person who is incompetent to contract, like a minor, persons of unsound mind, persons disqualified by law, they cannot enter into a partnership. However, if all the partners agree, a minor may be admitted, but it will be only for the benefits of partnership. That means he will be entitled only to have share in the profits. That is only for the benefits of partner, and that minor, he will not be a partner, he may be a member. The second point is, a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with the agreement among the partners. This is already discussed with you. A partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners. अगर एक partner को firm से retire होना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा और सबकी कंसेंट से वो रिटायर हो सकता है, और या फिर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली. एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल. इट इज नॉट कंपल्सरी. इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड. इट इज ऑप्शनल, बट इट इज डिजायरेबल टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड. जरूरी नहीं है इसको रजिस्टर करवाना, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर इसको, इट इज प्रेफरेबल कि इसको रजिस्टर करवाया जाए, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारी प्रिविलेजेस नहीं मिलती जो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को मिलती हैं. इसलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना जो है डिजायरेबल होता है. और अनलेस अदरवाइज एग्रीड by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of partner. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा है तो then it's fine, but otherwise a firm is dissolved on the death of a partner. So these were the important provisions of Indian Partnership Act that I had to discuss with you, and that was all about the topic for the day.
I hope you have understood it, and we shall be discussing further new points in the next class. Thank you.